Dear student, I am Manor Patil. Welcome to lecture series 2024 MST CET. In this lecture, we have to study about the circular motion. We have to study the most important formulas that can use to solving the numerical or MCQ on the basis of circular motion. So let's start. What is meant by angular velocity and what is meant by angular acceleration? Very simple. It is denoted by letter omega, that is d theta by dt. What is meant by d theta by dt? That is the rate of change of angular displacement is equal to angular velocity. And similarly, what is the angular acceleration? It is denoted by letter alpha, that is d omega divided by dt. Means the rate of change of angular velocity is equal to angular acceleration. So SI unit, that is radian per second, and SI unit of angular acceleration is radian per second square. So dimension formula is mass absent, length absent, only time present, that is t raised to minus 1. Dimension formula is m0, l0, t minus 2. Now it is the vector quantity. It is also vector quantity. Remember, most importantly, what is the direction of angular velocity and acceleration whenever the particle performing circular motion? So let's draw the diagram. This is the diagram. Here the object is present here having mass m. Now it is moving in anti-clockwise sense. Next diagram, object is here, mass m moving in clockwise sense. So we have to find out the direction of angular velocity when the object is moving in anti-clockwise sense. So आपको बस thumb rule use करना, right hand thumb rule. So ये जो भी direction है, that direction shows the direction of movement of that particle, and thumb shows the direction of angular velocity. Remember. So in this example, so what is the observation? A particle is moving in clockwise sense. So whenever the particle is moving in clockwise sense, so that is our finger shows the direction of motion of that particles and thumb shows the direction of angular velocity. So for second case, so direction of angular velocity is inward. For this case, direction of angular velocity is outward. Remember. What about the angular acceleration? You have to remember the two important notes. Whenever the angular velocity is increases, so the direction of angular velocity and angular acceleration is same. And whenever the angular velocity is decreases, so direction of angular velocity and angular acceleration are opposite. Remember the example, whenever we on the fan, velocity increases. In this case, angular acceleration help angular velocity. So दोनों का direction same रहेगा. Whenever we off the fan, what happen in that case? Velocity decreases. So in that case, direction of angular velocity acceleration जो भी रहेगा वो अपोज करेगा. किसको अपोज करना है? उसको angular velocity को. Remember. And what is the relationship between the angular velocity and linear velocity? So now we know that linear velocity is tangential component. So that is v equal to r omega. और आपको जो भी फार्मूला पूछा जाएगा वही आएगा. That is vector form आपको याद रखना है. They always ask the example on the basis of vector form. ये अच्छे से आपको याद रखना है. Very simple है और very important है. One more formula. So acceleration is equal to, मतलब tangential acceleration is equal to, that is the rate of change of velocity. Which velocity? This velocity, that is tangential velocity. और हमें पता है d by dt, v means what? That is r omega. So हमें put करना है r omega. So r तो constant है, r change नहीं होगा. So that is d omega divided by dt. R omega into d omega. Sorry. Next formula. So that is acceleration is equal to dv by dt, as we know that d by dt of
व्हाट इज वैल्यू ऑफ v, दैट इज r ओमेगा. सो रेडियस ऑफ द सर्कल वो तो फिक्स रहेगा, ओनली चेंज क्या हो सकता है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी. और हमें पता है d ओमेगा बाय dt मीन्स अल्फा. सो दैट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, this is the linear acceleration and this is the angular acceleration. So this is the relationship between the linear acceleration and angular acceleration. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उसको, a equal to r अल्फा. सो याद रखना है ये आपका बन गया linear acceleration और ये आपका बन गया angular acceleration. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आपका बन गया linear velocity और ये आपका बन गया एंगुलर वेलोसिटी. बहुत ही सिंपल है, अच्छे से याद रखना है आपको. व्हाट इज मीन बाय एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज मीन बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. रिमेंबर द SI यूनिट डायमेंशन, नाउ बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी. और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है हाउ टू शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड angular acceleration. Remember, take the screenshot. We go for the next. Okay, next is most important. What is meant by UCM and non-UCM? UCM means uniform circular motion. Non-UCM means non-uniform circular motion. So what is the best example of uniform circular motion? So if any object performing the circular motion, any object performing the circular motion with constant speed, उसका स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट. एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूसीएम, दैट इज द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब उसका स्पीड चेंज होगा. बेस्ट एग्जांपल, व्हेन वी ऑन द फैन उसका स्पीड इंक्रीज होता है, व्हेन वी ऑफ द फैन उसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज चेंज इन स्पीड. नेक्स्ट UCM, velocity continuously changes. Why the velocity of that particle continuously changes? We know that when the particle at point A and then it goes to the point B, so what happened in that case? I already told you, that is the velocity direction is tangential. Velocity always tangential. Linear velocity is tangential component. So whenever it has at point B, so now direction is, so now we know that direction continuously changes. So therefore direction continuously changes, so therefore we can call uniform circular motion is accelerated motion. Remember, it is the accelerated motion. ये आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है. ओनली 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है. स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगा, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एंड देन व्हाट अबाउट दैट, द एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. नेक्स्ट नॉन यूसीएम, सो वेलोसिटी चेंजेस, इसमें वेलोसिटी ऑलरेडी चेंज ही होगा, कंटिन्यूसली चेंज. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये पता होना चाहिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, दैट इज centripetal acceleration. Remember, centripetal acceleration is responsible for circular motion and it is denoted by letter AC or AR. AR means that is the radial component. Radial का meaning simple है, उसका direction जो भी रहेगा along the radius रहेगा. And what is the direction of centripetal acceleration? Remember, towards the center of the circle. This is the direction of centripetal acceleration, means it is radially directed towards the center, मतलब along the radius रहेगा, towards the center रहेगा. तो उसका डायरेक्शन आपको याद रखना है, along the radius and towards the center of circle. ये आपका बन गया डायरेक्शन. किसका डायरेक्शन बना है, डायरेक्शन आपको याद रखना है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन. फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला बहुत ही सिंपल है, दैट इज v² डिवाइडेड बाय r. So there is one more formula in terms of angular velocity, that is r omega square. So ये बहुत ही important फार्मूला है.
अच्छे से याद रखना है इसको। डन, ओके। वन मोर क्वेश्चन यहाँ से आएगा, बहुत ही इजी है। व्हाट इज द, आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। देयर आर द टू कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेकेंड कंपोनेंट दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल acceleration. What is the formula? That is, it is denoted by at dv by dt. और हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, दैट इज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना आएगा फिर, अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। आपको अभी अच्छे से समझना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो भी रहेगा, whenever the object performing uniform circular motion, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। वाई इट इज जीरो? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा स्पीड का, सो व्हाट अबाउट द फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, जीरो हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि whenever the particle performing uniform circular motion, out of the two components only centripetal acceleration is present and tangential acceleration is zero. And while when it's performed the non-uniform circular motion, so remember both components are present, tangential components as well as centripetal acceleration. Remember the formulas. Take the screenshot. Next, centripetal force and centrifugal force. Again we go by diagrams. When the particles is performing the circular motion, when the particle is performing the circular motion, so आपको याद रखना है जो भी particle है, who is responsible to performing the circular motion, that is centripetal acceleration. And which real force is responsible, that is सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको याद रखना है जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो वो सर्कुलर मोशन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, दैट फोर्स वी कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये जो फोर्स है दैट इज द रियल फोर्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस वाइल बाय दैट ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सबको याद रखना है रियल फोर्स। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू द एक्शन एंड रिएक्शन, what is the direction of that centripetal force, similar to the direction of radial component. So direction of centripetal force is, direction of centripetal force is along the radius, along the radius and towards the center of the circle. Last and most important formula, the formula is F equal to mass into centripetal acceleration। हमें centripetal acceleration का formula पता है, that is v square upon r और m r omega square। This is the formula of centripetal acceleration. So you have to remember the three main important observations। पहला observation है जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होगा, वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो रियल फोर्स रहेगा, उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, अलोंग द रेडियस रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड आपको याद रखना है। व्हाट अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता है, एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। डेफिनेटली अगर यहाँ पे कोई एक फोर्स है तो उसको बैलेंस के लिए एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में कोई तो भी एक फोर्स होगा, दैट फोर्स इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसका डायरेक्शन क्या बनेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सिमिलरली along the radius and
away from the center of the circle. तो ये सिंपल है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, उसका मैग्नीट्यूड भी सिमिलर रहेगा तभी वो बैलेंस होगा तो सेम रेडियस पाथ फॉलो करेगा. सो उसका मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इज सेम, ओनली व्हाट इज द डिफरेंस, दो ही डिफरेंस आपको अच्छे से याद रखना है. दिस इज द रियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स. सूडो मीन्स इमेजिनरी फोर्स. इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, दोनों का मैग्नीट्यूड रहेगा सेम, अच्छे से याद रखिए. नेक्स्ट, बैंकिंग ऑफ रोड, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. द मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक रोड मतलब whenever we take the turns on the road, what happen, there is a some inclination and we have to call that inclination equal to angle of banking. So we draw the simple diagram. So whenever the vehicle take the turn, there is a angle between the road surface and that inclined surface, that angle it is called angle of banking. So vehicle is taking the turn, we draw, this is the diagram of vehicle, मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है, and we have to resolve the forces. So जब भी हम forces को resolve करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि always weight जो भी रहेगा how it is act vertically downward, that is mg, weight equal to mg. और उसको बैलेंस कौन करेगा, नॉर्मल रिएक्शन. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आएगा. नॉर्मल रिएक्शन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, तो इट बिकम्स थीटा. ये एडजेसेंट साइड बना, मतलब ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा, n cos ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा n sin ऑफ थीटा. सो वेरी सिंपल है, हमें पता है कि व्हेनेवर व्हीकल जब भी बैंक रोड से जाएगा मतलब इट्स मेक द कर्वेचर, और जब भी वो कर्वेचर बनाएगा सो रिमेंबर दैट इट इज इन सर्कुलर मोशन, वो कर्वेचर में जा रहा है मीन्स इट इज इन सर्कुलर मोशन. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन. क्या मैग्नीट्यूड है उसका, एम बी स्क्वायर अपॉन आर. सो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, फर्स्ट वाला एन साइन थीटा, एन साइन थीटा responsible means now it's provide centripetal force, that is mv square upon r. और सेकेंड वाला कंपोनेंट n cos theta बैलेंस द वेट mg. n cos theta किसको बैलेंस करेगा, वेट mg को, और n sin theta क्या है, दैट इज नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइडेड टू टर्न दैट व्हीकल विदाउट स्लिपिंग. आप दोनों को इसका टेकिंग द रेशो, अगर हम इसका रेशो लेंगे तो एन एन गेट कैंसल, साइन बाय कॉस थीटा क्या बनेगा, दैट इज tan ऑफ थीटा. और यहाँ पे व्हेन वी टेक द रेशो टेक करना है, व्हेन वी टेक द रेशो बहुत ही सिंपल है, मास गेट कैंसल, एन गेट कैंसल, साइन बाय कॉस tan, और ये आपका बचेगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी. सो यहाँ से आप हमें मिल जाएगा फार्मूला v square equal to r g tan of theta and then v equal to under root of r g tan of theta. Remember this is the most important formula of banking of road, where r is the radius of curvature, g is the acceleration due to gravity and theta is the angle of banking. So जब भी vehicle जाएगा तो what is the maximum safe speed limit and what is the minimum speed limit. So now we have to remember the formula for maximum velocity for no skidding and minimum velocity for no skidding or slipping. So very simple, remember the formula v max v minimum is equal to under root of, यहाँ से याद रखना है आर जी आर इंटू जी, और ब्रैकेट आपको अच्छे से याद रखना है, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, दैट इज म्यू एस प्लस tan theta 1 minus mu s into tan of theta, mu s minus tan theta divided by 1 plus mu s tan of theta. So in NEET 2020 they directly asked the question which of the formula is correct for maximum velocity for no skidding
तो ये फार्मूला वहाँ पे दिया था, देयर आर द 4 ऑप्शंस, आउट ऑफ विच आपको एक करेक्ट सेलेक्ट करना था, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट, motion of particle tied to a string in a vertical circle। vertical circle मोस्ट टाइम पे टॉपिक, आपको डेफिनेटली सीटी हो, नीट हो या जेई हो, ये टॉपिक पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। एंड फॉर सॉल्विंग दैट क्वेश्चंस यू रिक्वायर्ड ओनली 7 फार्मूलाज, वेरी सिंपल। लेकिन आपको प्रैक्टिकली वो एग्जाम्पल याद रखना है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल टाइड टू अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ले लिया, उसको हमने वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व किया, सो ऐसे वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व किया। सो जब भी हम वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करेंगे तो उसके 3 पोजीशन बनेंगे, वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करेंगे तो 3 पोजीशन बनेंगे, एक वाला बॉटम वाला, सेकेंड वाला हॉरिजॉन्टल और लास्ट वाला ऊपर वाला। सो दैट इज हाइट, हाइट, देन हॉरिजॉन्टल और लास्ट लोवेस्ट पॉइंट। सो वी मार्क फर्स्ट दैट पॉइंट, ये आपका बन गया हाइट वाला पॉइंट, ये आपका बन गया horizontal वाला point, and that is the point of lowest। so we consider the particle A point पे और यहाँ से B point तक गया, उसका मोशन हुआ यहाँ पे। so this is the particle having weight act vertically downward, और जो भी string रहेगा, string में क्या act होगा, that is tension, tension in the string। और what is the direction of that tension, याद रखना है, towards the center, towards the center। so टेंशन का डायरेक्शन बनेगा towards the center, very simple। so weight जो भी रिजॉल्व होगा 2 कंपोनेंट में, that is थीटा, ये आपका बने कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा, and this is the component is that is mg sin of थीटा। पार्टिकल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, वेरी सिंपल। सो रिमेंबर डायग्राम। ओके, सो यहाँ से हमें ऑब्जर्वेशन करना है, टेंशन यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम फोर्सेस अप्लाई करना है। आफ्टर अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम, आफ्टर अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम फोर्सेस, सो व्हाट वी गेट, दैट इज t minus mg cos थीटा, t minus mg cos थीटा। ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r। सो ये फार्मूला आपको याद रखना है, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला आउट ऑफ द 7। अगर ये फार्मूला पता रहेगा तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व एग्जांपल दैट कैन बी आस्क्ड इनटू द नीट, सीटी और जेईई एग्जामिनेशंस। सो यहाँ से हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द एंगल दैट इज थीटा व्हेनेवर इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। वो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, लोअर पॉइंट। सो लोअर पॉइंट पे थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 0। व्हेनेवर इट इज एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट, थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एंड व्हेनेवर इट इज एट अपर मोस्ट पॉइंट, दैट इज हाईएस्ट पॉइंट, तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा रहता है कि व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग in vertical circle, so what is the tension in the string at the lowest horizontal height। so whenever the question is asked, तो आपको थीटा पता होना चाहिए, according to that हमें थीटा का वैल्यू पुट करना है, when थीटा इक्वल टू 0, when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री and when थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सो क्या आंसर आएगा, थीटा इक्वल टू 0, cos 0 is 1, सो बचेगा mg उस साइड में चला जाएगा, वी गेट द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, व्हेन cos 90 डिग्री 0, ये कंप्लीट 0, सो टेंशन कितना रहेगा, mv स्क्वायर अपॉन r, कहाँ पे रहेगा, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे। और नेक्स्ट, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, सो cos 180 कितना आएगा, -1, माइनस माइनस का प्लस उस साइड में जाएगा तो -1। सो ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन remember the angle, and according to that angle after the substitution we get the tension in the string। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेंशन का जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे रहेगा और कहाँ पे मिनिमम रहेगा, देखते हैं हम अभी। सो वी कंप्लीट द 1 फार्मूला आउट ऑफ 7, वी गो फॉर द नेक्स्ट। तो आपको बहुत ही सिंपल याद रखना है, 1 3 5, लेकिन तीनों नंबर याद रखना, 1 3 और 5। बताता हूँ मैं कैसे। v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 आर जी,
एंड v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 r g। तो वेलोसिटी कंप्लीट हो गया। व्हाट इज वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट? v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg at the horizontal under root of 3 rg, at the lowest v equal to under root of 5 rg। complete। next what about the tension? so tension at the highest point 0 रहेगा, tension at the horizontal that is 3 mg, and tension at the lowest point that is 5 mg। so how many formulas we completed? 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 फार्मूलेज आपको याद रखने, और यू विल कैच करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा। और इम्पोर्टेंट बताता हूँ मैं, वेन एवर नाउ इट परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे रहेगा? मैक्सिमम टेंशन रहेगा लोवेस्ट पॉइंट, ये आपको याद रखना। मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग is at lowest point, और मिनिमम टेंशन कहां पे रहेगा? मिनिमम टेंशन is at highest point। तो इतना आपको याद रखना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छे से इसको नोट डाउन करना है। और whenever you solve the questions on NEET and JCET on this topic, you can definitely address, just remember 7 formulas। take the screenshot, we go for the next। टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम मतलब कोन के शेप में वो रिवॉल्व होगा। सो आपको बस फार्मूला याद रखना, दैट इज टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एंड लास्ट टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। सो इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है, टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम depends on length of the string, angle, and last one that is acceleration due to gravity, and does not depends on that is mass of the string। स्ट्रिंग का मास तो निग्लिजिबल है, इसको लिखना भी नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, दैट इज मास ऑफ द बॉब। सो जब भी हम कॉनिकल पेंडुलम का स्टडी करते हैं तो ऑलरेडी स्ट्रिंग का जो मास है वो निग्लिजिबल लेते हैं, सो दैट इज द लाइटर इन वेट। सो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ दैट बॉब। सो आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल था, अच्छे से थ्योरी आपको एक बार देखना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, और देन गो फॉर द सॉल्विंग द एमसीक्यू ऑन एमएसटी सीईटी नीट और जेईई, कोई भी टॉपिक होना चाहिए, मतलब कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आप कर सकते हो। I hope you will understood properly। if you any doubts you can ask me, text me, and for most importantly please for more videos please इसको like करना है, share करना है, और comment and subscribe तो जरूर करना है। Thank you very much।